Good evening, everyone. Recording Myself, start केलं का? Okay. okay. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. Hello, I'm your Mansi. host for today. I Thank welcome you. you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji Dr. Liyakat Namole sir. And it gives me immense pleasure to announce that it is our 92nd lecture. And I feel blessed, happy and honored to welcome today's speaker, none other than our beloved Guruji, Dr. Liyakat Namole sir. So sir needs no introduction. Still, I have few words to say about sir. So Dr. Liyakat Namole sir is most eminent and passionate homeopath from Nashik, Maharashtra. Sir has conducted more than 300 seminars and more than 250 webinars all over. Sir has conducted nationalized seminars on specific diseases like cancer, diabetes, pediatrics, skin, etc. And sir, as I always say, sir is a visionary. His motto is to convert 10,000 GPs to homeopathy. And till now, sir has successfully converted more than 1,000 of GPs to homeopathy. If they are not practicing 100% homeopathy, but practicing general practice and homeopathy together. There is a pioneer of the group that is Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors are learning on daily basis. Sir has invented his own method, that is unique method of mind, MML, mind method by Dr. Liyakat, where he has simplified the homeopathy. The focus of MML is to practice solely on mind, and empathy is the mantra. Liyakat sir is master of gestures. Sir has invented and introduced many gestures, many original gestures into homeopathy, and this is blessing to the world of homeopathy. Sir is an author of the book that we all know, Humanopathy. Most of us have already read the book, and it is a bestseller book. More than 10,000 copies have been sold till now, and sir is working on the second edition. As we Ready. always say, sir is a teacher by passion and not by profession. So he has simplified homeopathy and we experience in our daily practice. So we are grateful for sir. And apart from this homeopathic background, I must say sir is a marvelous poet too. So friends, without wasting much time, let us learn with sir. Let us welcome with huge round of applause for sir. Welcome, sir. Over to you. Thank you, beta. So sweet of you. I get so moved by so much of praise. I'm not used to so much of praise. Anyways. All right. Thank you very much, Mansi. Thank you. It's always an honor to come to our own platform. This platform is my child. Okay. So, Welcome. friends, I am many of my students must be knowing this remedy. So, if they know it, if they know the remedy, I would request them to just keep mum for a while. I think I took this case a few days back in one of my courses. Okay, so those who know this case, please keep mum. I have many cases. I'll be explaining you very simple. There was a case. Okay, a lady age 25 years, a girl age 25 years, came with various complaints. Okay, this lady had come with rash on the skin. Okay, aggravated in summer, aggravated in sun. Please remember the aggravation time, summer and sun. Okay, so when she goes to the sun, she gets this rash-like things. Okay, now the situation is that I asked her. See, whenever there is a skin problem, skin is what we will be talking as. Skin is expression. Okay, so if you don't get much chance to express yourself, especially under sun means when there is light, when you can
where you're supposed to express. When if you're not given any chance to express yourself, then you get such rashes. Okay, so I directly asked, tell me, is there any tension? She said, no tension, nothing. I said, come on, you need to tell me, because we need to understand this to treat you. In homeopathy, we need to understand these things, right? So I asked her these things. So she was like, I had such a bad this thing. Sasural mother-in-law is very strict. I said, who's there in your house? So she said, me, then my children, mother-in-law, father-in-law, and she has her sister-in-law and her husband also. And she has her co-sister and brother-in-law. So ननद भी है, सासू है, ससुर है, देवर, जेठ और जेठा, देवर और देवरानी. Okay, और इसके 2 बच्चे. Okay, the girl's age is 25 and she already has 2 children. I said, when did you get married? She said, I got married six years back. So at the age of 19, she got married. I said, why you got married at 19? Is it a love marriage? She said, no, sir. My father passed away quite early in my life. So like we got a good proposal. So she lived with her mama. So mama thought there is a good proposal. The boy is earning well. They have very good shops and all at a smaller village. It's an Adivasi village, but it's a like sort of a marketplace. Okay, so then she got married there, and she got a child, and the husband is not taking care of her much. She has to do all the works in the house. Now the mother-in-law, because of her sister-in-law, the mother-in-law is more towards like her sister-in-law. मतलब माँ तो उसकी बेटी और उनके बच्चों में ज्यादा मगन रहती है. इसके बच्चों की तरफ माँ ध्यान भी नहीं देती है. ठीक है, और हस्बैंड भी नहीं देते. This girl is actually she was in 12th standard that time. She's a good, as for what she said, that she used to score well in the school in okay. So she passed 12th standard and she immediately, I mean, after the exam, she got married immediately. She wanted to study, of course. She wanted to do things like teacher or something. Like she said, I wanted to be independent. Like I wanted to do something, okay, for my mom, or I wanted to be on my own. Okay, she wanted to stand on her own feet. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. She wanted to stand on her own feet. But the thing is, she got married, and now that she said I got married, so she delivered a baby boy and then a daughter. Okay, there's so much of pressure in the in-laws from her in-laws side. Okay, that she cannot even come to her mother's place, which is hardly 30 kilometers from her town. Okay, so it's hardly 10-20 rupees the taxi wala charges, 20-30 rupees. But she is not allowed to stay here overnight. अभी अभी तो क्या हुआ था, she said कि once so much my husband was so much angry on me. I had come for a funeral and then he asked me to come back at 8 o'clock when her mama passed away, right? Okay, who was like a father to her, the one who took care of her after her father's death, like the one who took care of her after the father's death, like her mother and younger brother. Okay, so she was like when she came for his funeral, 8 o'clock the husband called her back, and there was no taxi and all that. It was night and she was all alone with her kids. But she said, the husband said कि you have to come back. तो इसके बेचारे इसके भाई ने इसको टैक्सी में बिठा दिया वहां पर, जिसके अंदर शी वाज सेइंग कि सारे मर्द थे. मुस्लिम लड़की है, बरखे में आई थी, पर मुझे जाना पड़ा. और ये देखो 8:45 8:50 समथिंग लाइक दैट शी रीच्ड हर होम. बट मदर इन लॉ ने इसको घर में नहीं लिया. दिस गर्ल वाज सिटिंग बाहर बैठ के रही, outside the house, outside the door, and when husband came, husband saw her. एक जगह से देख के फिर निकल गया. Husband came back at 11 and then she was allowed to enter the house. Okay, और इतनी हस्बैंड उसका फादर इन लॉ इतनी बुरी बुरी गाली देता है. ये जब लड़की दुकान पे उनका टिफिन वगैरह लेकर जाती है देने के लिए, दे आर रनिंग सम शॉप्स, दे हैव lots of things, sweet shops and all that. तो ये जब लेकर गई
लेकर जाती है तो फादर इन लॉ इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं सर, शी वाज सेइंग, शी वाज इन टीयर्स, लाइक इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती इतनी गालियां। और मैं बोला हस्बैंड कुछ नहीं बोलते? कि नहीं सर, हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, हस्बैंड बोलते जाने दो मेरे पिताजी है। मम्मी के बारे में भी हस्बैंड बोलते कि जाने दो मेरी माता जी है। तो इतनी ये अवस्था में ये लड़की है। दिस इज द केस। हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्टेंस इज 8 years। ओके, सिमिलर केसेस आई हैव, very similar case I have. One similar case I had was hypothyroid, where the girl was obese. She was hyperthyroid. She was thin. Then she took treatment, and then she went into hypothyroid. Okay, she went into hypothyroid. She became obese. She had 3 abortions in like in a span of 1.5 years. After her marriage, again the girl was like 19 years, something like that. One more case I have of OCD, 2 cases of OCD, but similar situation. Okay, one situation I'll tell you once we finish this case. I'll tell you about this OCD case also. I'll tell you. Okay, so this is the case. I would like to talk to you people now. I want you all to unmute, like those who want to uh, interact. Please. Good Hello. evening, sir. Yes, Good evening, beta. sir. Is it indignation? Yes, indignation. Very good. Yeah. And is it also ki anger suppressed or Anger. domination is it? Yes. Will it be domination and anger suppressed? Because she Yes. is not able to express, so the skin is expressing. Hmm. Very good. Yes. This is what I could Very good. formulate. So what is the possible remedy that you think about? I'm not repertorizing, but I will go like natrum thing. Okay, you're thinking of natural mode. Fair enough. Anybody else? और कोई? सर सर Okay. Hmm. ये एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज यहाँ पे लग रहा है। Ailments from sexual abuse. Okay. और Why sexual abuse, beta? तो वो यानी उसको जल्दी शादी करनी पड़ी उसके पापा को, यानी डेथ के बाद कुछ चारा नहीं था, वो पढ़ना चाहती थी और इधर आकर भी सास उसको तकलीफ दे रही है। और उसके ससुर भी गालियां देते, वो सहन कर रही है। और यानी जो यहाँ पे हस्बैंड ने बोला आना है तो आना ही है उसको। और बाहर बैठा दिया, घर के बाहर बैठा दिया, घर में अंदर नहीं आने दिया। और बड़ी माइल्ड माइल्ड लेडी लगी, वो सहन कर रही है सब कुछ। तो ये Mm-hmm. मुझे लगा, इसके Fair बारे में enough. ये लगा। ओके सर। Okay. Sexual abuse कैसे ले रहे हो आप इसमें? वो एक लेडी सहन कर रही है वो सब कुछ। अच्छा, because she's a weaker sex. Okay. हाँ, All right. All right. All right. Okay. Grief, sorrow, death of loved ones. Dr. Padna. Okay. एम्बिशन था लेकिन कर नहीं पाई ना। एम्बिशन था उसका, लेकिन लड़की है, शादी कर दी उसकी, और 8 साल का डिफरेंस है, कुछ कर नहीं पाई वो। Okay. Great. मेरी और एक केस के अंदर ऐसा था कि हस्बैंड और ये लड़की के अंदर, मतलब हस्बैंड और वाइफ के अंदर 14 years difference. And that lady came to me for OCD and hypothyroidism. Okay. Similar situation. Okay. Rupali is saying trapped. Why trapped, Rupali? Yes, Rupali. How do you understand trapped? बिकॉज उसको इन लॉज के यहाँ पे भी कुछ अच्छा वो लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। उसका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इंडिग्नेशन हो रहा है, और शी कांट गो बैक बिकॉज हर मम्मीज का प्लेस है वहां पे भी उसको कुछ सपोर्ट नहीं है। फादर इज नॉट देयर, तो भाई है मामा तो की
हाँ, तो बोल रही भाई भी अपनी लाइफ में है बेचारा, वो भी बढ़ के सेटल होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सपोर्ट नहीं, ओके ग्रेट, सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, सपोर्ट नहीं है, तो मतलब उसको यहाँ पे भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, बट शी कांट गो बैक, ऐसा उसका दिस इज सिचुएशन। ट्रैप, जाल में अटक गई। हाँ। ओके, ठीक है। अपन जाल में कब अटकते हैं? हम्म, जाल को हिंदी में क्या बोलते पता है? मराठी में जाल को क्या बोलते? फांस। यस। फांसा फेंकते हैं ना। When out of greed someone comes to trap. Exactly. So you enter trap either by accident, okay, or you are like tempted to go to the trap, right? जैसे वो मछली को आप लगा देते हो तो आप उसमें जाते हो, फिर ट्रैप में अटकते हो, राइट? हिरन को भी आप ऐसे दिखाते हो, फिर ट्रैप में अटकती है। तो उसके अंदर एक लालच होता है ट्रैप में, या फिर बाय एक्सीडेंट भी जाता है। ओके। समझ गए? यस यस अंडरस्टूड? यस। So do you think there is a trap here? No. Rather, that this is a situation where she cannot get help from anywhere. Yeah, So exactly. simple rubric here is helpless. बेबस. Sir, carcinosin? Very good, because the situation is a desperate situation. Again, if you think even kingdom wise, desperate situation calls for nosode, right? So this is so you think about carcinosin in such case, right? Hello. Yes. But carcinosin, this remedy is little farther than carcinosin, little more worse than, little more deeper than. The one more remedy that comes in our mind is lycinum, right? Yes, sir. Because lycinum also has this much of abuse. So if you combine lycinum, but lycinum का again उस torment बहुत ज्यादा आएगा, है ना? इसमें दोनों में जब whenever you fail with lycinum, whenever you fail with carcinosin, think about this remedy. This is a very, very simple remedy, folliculinum. Okay, ailments from domination, ailments from sexual abuse. Okay. Yes, I am मेरे chat पे folliculinum मैं सोच रही थी से yes. Exactly. और यहाँ पर मेन चीज क्या है ना, सासू माँ का वरचश्मा है। ससुर भी कड़क है, सासू भी कड़क है, और हस्बैंड लुल्लू पुल्लू कर रहा है। समझ रहे हो? So there is one beautiful rubric, delusion. She is under powerful influence. प्रियंका तुझे वीडियो चालू है? Delusion, she is under powerful influence. This rubric will differentiate this remedy from carcinosin. Or whenever your carcinosin fails, think about this remedy. Very simple, very, very simple. So now let us. सर इसमें इंडिग्नेशन नहीं लेंगे ना? इंडिग्नेशन भी है ना बेटा, इंडिग्नेशन भी आता है, इंडिग्नेशन में भी folliculinum है। So let us understand folliculinum. Okay. See, no father, right? So father denotes what? Security, correct? Hello? Father denotes security. So no father, no security. Okay. So no father figure, no security. Here you again confused with carcinosin, because carcinosin is, there is a rubric, ailments from absence of father. Okay. Please remember this thing. So here you have to differentiate, because the domination here, there will be a powerful situation person who will be dominating. Okay. Or because of whom she will be bearing all these things. Okay. So no father, no security, sexual abuse and domination. So this will give rise to what? If a person has no security, no father, so such childhood, if somebody faces such childhood, if there is sexual abuse, if there is domination,
Like sexual abuse मतलब क्या? अभी one more case I had where the girl was like actually abused by her mama. Okay. Now when she told her mother, mother said ki no, how can you say it about my brother? When she went to hostel, again she was abused there by the relatives. I mean, so she could not say anything back because she had no backing. Why she did not say anything? Because she lost all the confidence. They become cold. Such people do not allow others to touch them. Okay, so such people will go into identity crisis. आपको अगर बचपन में कुछ आइडेंटिटी है ही नहीं ना, मतलब बाप नहीं, तो आपको आइडेंटिटी किससे मिलती? बाप से या माँ से? Father, my name is Liyakat Namole. So I'm carrying my father's name and my surname. So if you have a weaker father, or if you are dominated and sexual abuse का मतलब, again one male I had given, the boy was youngest in the family and his brothers and all were so dominating, उसका पूरा confidence बचपन में ही खत्म हो गया था. So that boy also had identity crisis. So confusion about identity, lack of confidence, indecision, irresolution. They get impressed very easily, right? Impressionable. Such people suffered from panic attacks. They develop fixed ideas that world is like this, like this, like this. So all this together, they will develop even OCDs. Because क्या हो जाता है ना? Then you tend to do things like you tend to mumble, you tend to do things. आप क्या करोगे? Venting is your vent is nothing but then obsessive compulsive disorder. Compulsive disorder. You will do something like आप मंदिर में जाके ऐसा 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 करोगे, आप जाके 10 बार नमाज पढ़ोगे, आप जाके कुछ करोगे, आप आज फिर पेन से कुछ करते रहोगे, आप पैर धोगे, आप हाथ धोगे, something or the other you will do. So whenever you have case of OCD, ask about the childhood. Ask if there is a history of no father, no security, domination, abuse. Please remember this thing. So any of these, please remember this thing. Okay. Next slide, Kashi. So no father, no security. Again, what you will have if you don't have confidence? Obesity, anorexia nervosa, bulimia nervosa. One more thing, if you are sexually abused, and then if you don't have father or if you don't have security, एक point ऐसा होता है ना कि you like it, you start liking it. Hello, if you are abused, also you are introduced. Also remember, abuse is introduction again, right? You are introduced to a new field. So if you are actually sexually abused, you tend to become lascivious. You develop lascivious fancies. One patient I had of folliculinum, she said, doctor, when the guy came to rape me, I closed my door. But I said, what if he comes inside? He's going to rape me anyways. So why not enjoy it? Can you imagine? I had given her calculus. Later on, I gave her folliculinum, seeing this fancies lascivious. Can you imagine? मेरा एक दोस्त है, सल्फर है, वो बोलता है when you can't avoid, if you can't avoid rape, enjoy it. Anyways, how to change the slide? Okay. IPR. How is the IPR? How is the life situation? Delusion under powerful influence. The powerful influence can be husband, can be mother-in-law, can be father. How? कि father का बहुत बड़ा नाम है. Father नगर से होके, father सरपंच है, father मौलाना है, father सोसाइटी के अंदर नाम है, father पंच है. समझ रहे हो? तो फादर ऐसा है तो फिर उनके नाम के लिए भी फिर अपना नहीं कुछ कर पाते हैं. माँ स्ट्रांग है, माँ भी डोमिनेटिंग है, माँ का कुछ नाम है, तो वहां पर भी नहीं कर पाते. Okay, now domination, abuse.
डोमिनेशन अब्यूज दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल, रिलीजियस अब्यूज इज ऑल्सो पॉसिबल, कि बचपन में शादी करा दी, या बचपन में आप पे ये संस्कार डाल दिए कि नहीं लड़की ने ऐसा रहना है, घूंघट पे रहना है, जो लगे वो सहन करना है, तो आप पे वो संस्कार भी हो जाते हैं। एक टॉट कॉन्सेप्ट होता है, एक आप खुद सीखते हो और एक आपको सिखाया हुआ आता है। तो टॉट कॉन्सेप्ट के अंदर भी रिलीजियस अब्यूज विल कम। ओके, सो रेप, very nice, one girl said she got married at early age. So early age marriage is rape. Hello, if the girl is not like happy, if the girl is not like if the वो जोड़ा सही नहीं है, तो लड़की के मन के अंदर तो फिर बाद में वो रेप लगेगा ना, समझ रहे हो? So what is the reaction? The reaction to such situation will be, obviously first reaction will be anger, क्योंकि she is feeling dominated. Why she is telling this thing are happening to me. मतलब इसको खुद को दिमाग है, इसको खुद को सर है, तो जिसको है, जिसको हाइट है, जिसको सर है, उसी को डोमिनेशन फील होगा, समझ रहे हो? तो obviously first reaction will be anger, rage in some cases, right? Indignation. और जिनको रेप हुआ रहता है, जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ रहता है, वो लोग they don't like touch aggression, ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, है ना, क्योंकि इट इज अ नॉइज फॉर देम, ओवर सेंसिटिव टू सेंसुअल इंप्रेशंस। सेंसुअल इंप्रेशन मतलब सभी, एक होता है फाइव सेंसेस और एक होता है सेंसुअल। सेंसुअल इज लाइक सेक्सुअल, इफ somebody is talking to them, they will feel कि ये फ्लर्ट कर रहा है, they will feel कि ये मेरे पास में फिर मेरा फिजिकल एडवांटेज लेने के लिए आ रहा है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो गाइस, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So situation क्या है उसकी? Situation is that she has to face, अगर ये गुस्सा कर रही है, रेज कर रही है, चिड़चिड़ कर रही है और सेंसिटिव हो रही है, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, पावरफुल इन्फ्लुएंस में है। सिचुएशन क्या है कि शी हैज टू फेस द मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एंगर, ऑफ हर रेज, ऑफ हर रिएक्शंस, सो शी कांट अफोर्ड दैट। तो ये क्या करेगी? शेल में जाएगी, अलग हो जाएगी, ओसीडी में जाएगी, ओबेसिटी में जाएगी, हाइपोथायराइड में जाएगी, रिपीटेड अबॉर्शंस में जाएंगे। हर प्रॉब्लम इज कॉन्फिडेंस खत्म, तो उसको यील्ड करना है, अंदर से खालीपन लगता है। दिस इज द नेचर ऑफ द पर्सन, नो कॉन्फिडेंस, यील्डिंग, एंड शी फील्स एम्प्टीनेस फ्रॉम विद इन। खालीपन लगता है, नॉट हॉलोपन, नॉट हॉलोनेस, प्लीज रिमेंबर, खालीपन अलग है और हॉलोनेस अलग है। हॉलोनेस मतलब खोखला, जो थुजा में लगता है। खालीपन मतलब कुछ कमी है ना, जैसे बाप नहीं था बचपन, वो खाली रहेगी ना, वो कमी पूरी नहीं हुई, किसके तरफ बाप बोल के देखे। वो एक सिक्योरिटी चाहिए थी, बड़ा भाई चाहिए था, रक्षण करता चाहिए था, वो नहीं मिला, वो रह गया, वो खालीपन लगता है उनको अंदर से। दैट इज वाई दिस पीपल ऑलवेज वांट कंपनी, दे विल प्रेफर अ बिग फैमिली। बड़ी फैमिलीज के अंदर ही सेक्सुअल अब्यूज होता है, बट इनको कंपनी चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस से कंफ्यूज कर जाओगे, थोड़ा सा याद रखना, कंपनी डिजायर है ना, वो क्या बोलती है कि बस मुझे अकेला नहीं छोड़ना। अब अकेलापन आपको कब लगता है? एक जवानी में लगता है अकेलापन, जब आपकी उम्र आती है, जब आपको प्यार चाहिए होता है, आपको प्यार नहीं मिलता है, या फिर घर में माँ बाप नहीं है, ढंग का प्यार नहीं मिला है मायके में, तब आपको प्यार चाहिए। और दूसरा अकेलापन आपको लगता है मेनोपॉज के बाद, क्योंकि फिर आफ्टर मेनोपॉज द फीमेल्स बिकम सैड, morose, depressed, gloomy, and the male's interest in the female starts fading, because all her body organs start becoming lax. She doesn't get those hormones, very less hormones are secreted after the menopause. So उसकी skin वगैरह पे wrinkles आने शुरू हो जाते, तो males start losing interest in them, so they will feel again alone. So this is why this remedy has lots of problems at menopause. Now the situation again, because of this, because of her burden of the childhood, she will have, and because of the irresolution and lack of confidence, what she will have?
she will have irritability, she will have alternating state because she is confused कि चिड़चिड़ करूं या इंडिफरेंट हो जाऊं. तो she will become indifferent क्योंकि दिमाग तो कंटिन्यूस चल रहा है. दिमाग शांत थोड़ी ना होता है आपका. आप सो जाते हो, दिमाग नहीं सोता है. तो इंडिफरेंस, ये सारे मैं पेशेंट के सेंटेंसेस बोल रहा हूँ. डॉक्टर मैं सोता हूँ, दिमाग नहीं सोता है. तो इंडिफरेंट हो जाएगी, चिड़चिड़ करेगी, फिर इंडिफरेंट, जाने दो जो हो रहा हो. चिड़चिड़ करेगी, फिर छोड़ देंगी. इंडिफरेंस अल्टरनेटिव विद एंगर, गुस्सा करेंगी, उसके साथ में अल्टरनेट करेंगी, इंडिफरेंट हो जाएंगी. एक्साइट हो जाएंगी. एक्साइटमेंट के बाद क्या है कुछ उसको लाइफ में. एक्साइटमेंट होती है तो हस्बैंड है पसंद का, हस्बैंड तो नहीं के जैसा है. वेरी क्लोज टू एपिस अगेन. सेक्सुअल, आप फिर से सेक्सुअल डिजायर सप्रेस में मत चले जाना, प्लीज रिमेम्बर. क्योंकि यहाँ पर उसको बचपन के उसके कारण या उसको जो अर्ली एज सेक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा है. एट वेरी अर्ली एज शी वाज इंट्रोड्यूस. क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 आपको अफेयर होते हैं, प्यार होता है. 14, 15, 16 के साल में आपको प्यार होता है. सेक्स को आप इंट्रोड्यूस नहीं होते. आजकल के जमाने में हो सकते हैं. तो उसके बाद में भी आप अगर सेक्स को अभी अगर आप इंट्रोड्यूस हो गए हो तो आपको फैंसी चलते रहेंगे. बट आप एक्साइट हो जाएंगे और आपके पास पार्टनर ऐसा है तो यू विल नेचुरली बिकम सैड. वो है ना, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहा मैं बाल बनाकर जाऊं किसे, वो शख्स तो शहर छोड़ ही गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए. वो गाना था ना, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहा मैं बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए. समझ रहे हो ना कि मतलब ये नटेंगी सवरेगी लेकिन पिया ऐसा है कि उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है. तो यहाँ पर यू विल गेट कंफ्यूज विद एपिसमेल. ओके, this is why this lady will suffer from mood swings a lot in life, a lot. But she can't afford that. She has to, गुस्सा करने के बाद उसको फिर सब चिट सब फिर से वो अब्यूज सहन करना है. तो इसका ये चीजें भी सब माइल्ड मीक रहेगी. रेज में रेयरली जा सकती है, ऑफकोर्स जाएंगी, फिर वो ओसीडी में चले जाएंगी, फिर वो मेंटल इलनेसेस में चले जाएंगे. ओके, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ना, शी विल हैव नो विल, she will have loss of will, she will have weakness of will, right? Because she can't afford to have her will, right? So अब मेनोपॉज को अंडरस्टैंड करते हैं. एंग्विश इवनिंग एट सनसेट. इवनिंग एंड सनसेट इज व्हाट? मेनोपॉज. करेक्ट. मेनोपॉज से क्या आ गया? प्रोडक्टिविटी चली जाएंगी. प्रोडक्टिविटी गई तो मार्केट में आपकी कीमत चली जाती. एक आपके अंदर की आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है. ऑलरेडी आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आप मेनोपॉज में हो गए तो यू विल बी ऑफ नो यूज. तो अगेन यू विल फील कि वेदर दिस इज इग्नेशिया, फियर इनवैलिडिटी. प्लीज रिमेंबर, तो हियर यू विल कंफ्यूज विद इग्नेशिया. सो ये रेमेडी एपिस्मेल, कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, नक्सोमिका टू एन एक्सटेंट, ये सबको टच करके जाती है. लाइसिनम, इसको छू के जाने वाली रेमेडी. बहुत बार आप ये रेमेडी से कंफ्यूज करोगे. Okay, so she will become dull at menopause. Menopause aggravates these symptoms. So in GNM, in short, she is suffering from self-devaluation conflict. Okay. Any questions now, guys? It's a very short but a very, very important remedy. I am very sure in coming week, everybody will prescribe this remedy at least once. Since I have read this remedy, since I have understood this remedy, I've been using Folliculinum like anything, like anything. Am I visible? सर डिफरेंशिएट करना मुश्किल है. फीलिंग एकदम इग्नेशिया का बराबर है. तो देखो, आपको मैं बताया कि लाइफ सिचुएशन जान लो. सबको बचपन के बारे में पूछा, सबको बचपन के बारे में पूछा. Whenever you have cases like this, hypothyroid, OCD, lack of confidence, abuse, तो आप पक्का बचपन पूछो कि क्यों जल्दी शादी कर ली भैया, एक क्यों ये सहन कर रहे हो भैया. तो बचपन के बारे में आप जरूर पूछा करो. आस्क अबाउट द चाइल्डहुड, हाउ वाज योर चाइल्डहुड. आई आस्क चाइल्डहुड. मेरे को थोड़ा भी मेंटल लगा इलनेस, थोड़ा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, थोड़ा भी आइडेंटिटी क्राइसिस लगा, तो आई आस्क अबाउट द चाइल्ड. ओके सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मैंने 1-2 केसेस देखे हैं.
मतलब टीनेज गर्ल है 18-19 ईयर ओल्ड, बचपन में बहुत बुली हुई स्कूल में बच्चों से। घर में सब ठीक है, फादर थोड़े डोमिनेटिंग है, लेकिन बचपन में जब बुली ये तो होते हैं। थोड़े डोमिनेटिंग नहीं होते, स्ट्रिक्ट हाँ होंगे, डोमिनेटिंग नहीं होते। हाँ स्ट्रिक्ट होंगे, यस सर, स्ट्रिक्ट होंगे। करेक्ट तो वर्ड्स। बचपन में जो बुली हो के उसने जो 11th-12th में जब गई तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बना लिया, और वो उनके अंडर वो लोग जो बोले वो करे, उनको प्लीज करे ताकि मेरा ग्रुप ना छूटे, बिकॉज उसको स्कूल में नहीं मिला कोई भी फ्रेंड उसको। तो ये सिचुएशन में इसको मतलब इससे नहीं, रिलेट इसने कर सकते देखो, हैं क्या? ये तो इसने अपना प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया ना। हाँ, या यहाँ पर तो इसको प्रोटेक्शन नहीं है ना बेटा, ओके, सिक्योरिटी नहीं है ना, इसने बना लिया। वो मोस्टली वो उसका एडेप्टेशन हो गया ना। हाँ तो मतलब वो वहां पे वो डोमिनेट हुई फ्रेंड्स से, इसके लिए तो मैंने वो तो पूछा। कॉक्यूलस में जाएगी ना, ओके, रिकग्नाइजेस एक्सेप्ट रियलिटी एंड करके, एक्सेप्ट हाँ ना। एक्सेप्ट करके, हाँ ओके। उसको एक्सेप्ट करके मैथमेटिक्स एबिलिटी उसने बना लिया कि फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया कि सालों कोई मेरे को अभी डोमिनेट नहीं कर पाए, उसने प्रोटेक्शन बना लिया। तो वो तो फिर कॉक्यूलस में जाएंगी। ओके सर, गॉट यस, इट ना। यस सर, यस सर, या कॉक्यूलस में जाएंगी, लाइकोपोडियम में जा सकती है, क्योंकि लाइकोपोडियम भी धीरे धीरे अपनी टीम बनाते चलता, प्रोटेक्शन बनाते चलता। कॉस्टिकम रिवोल्ट करेगा टीम बना के, अगर डर है तो कॉस्टिकम भी टीम बनाएगा, पावर बनाएगा और फिर अलग करेगा। लाइकोपोडियम में है ना डोमिनेशन के अंदर। हाँ है ना सर, यस, समझ गए अभी। यस रिएक्शन सर, क्या है, पेशेंट का एडेप्टेशन क्या है, यहाँ पर ये यस, हेल्पलेस फीलिंग को केटर कर रही है। The closest remedy to folliculinum I have found after carcinosin is folliculinum. I mean, sorry, is falcopy. क्योंकि फाल्कोपी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है सेक्सुअल अब्यूज की और डोमिनेशन की, और फाल्कोपी में भी वो टच एग्रीवेट्स वाला पंगा हो जाता है, क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो दे डोंट लाइक टच, वो बैड टच के अंदर बहुत चले जाएंगे, वो फिक्स्ड आइडियाज हो जाते हैं, तो ये लोग पंगे कर देते हैं फिर बाद में। ये जब फिक्स आइडियाज में जाते हैं तो इनके पास में, इनको अगर कोई ढंग से बात भी करे तो इनको लगता है यार मेरे पास गलत इस्तेमाल करने आया था, तो ये कहीं भी कुछ भी बोल देंगे, किसी पे गलत इल्जाम लगा देंगे। समझ गए ना, उसके अंदर ये गुड टच बैड टच के पंगे आ गए हैं। मतलब इनके साथ आप ढंग से बात भी नहीं कर सकते। फॉलिक्यूलिनम का क्या है, आप अगर बात कर दो थोड़ी सी भी ना, एकदम ऐसी अपने वाली कि उसको कंफर्टेबल करने के लिए, तो उसका गलत मतलब ले लेगी। समझ रहे हो, क्योंकि टच का उसको प्रॉब्लम है, सेंसुअल इंप्रेशन वो है ना, फिर से अल्टरनेटिंग विद सैडनेस, यस सर, तो उसका गलत गलत मतलब कर लेगी। समझ गए। तो इट इज वेरी यस, ट्रिकी फॉर द गाइज टू हैंडल सच पेशेंट्स, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल सच पेशेंट्स। वी कैन नॉट मेक देम कंफर्टेबल, इफ यू ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल वो वाट लगा देंगे। तो बेस्ट वे इन सच केसेस, whenever it's a case of mental case or childhood abuse, stay away is my advice to the male doctor. Stay away and be very professional with them, and cut to cut बात करो, दवाई दो, कल्टी। And folliculinum acts best in 1M. That is advice. Of course 200 also I have done lots of cases, but 1M has done marvelous result. Hypothyroidism 200 weekly dose has done the job, but anorexia nervosa, bulimia nervosa 1M, repeated abortions 1M. Okay. Infertility safe will be 6 or 30. My advice is give folliculinum on 5th day or 10th day of menses. If it is a case of infertility, and if it is like if she is folliculinum, give it on 10th day or 4th day. If you are lucky, if the menses are for 3 days or 4 days, give it on 5th day, or safe is give it on 10th day of the periods. सर 2 डोज 5th डे में फिर 10th डे में? क्या बेटा? सर 2 डोजेस देना पड़ेगा 5th में? 1 dose. 1 Either of you, अगर मेंसेस 5 दिन से ज्यादा है, देखो ड्यूरिंग मेंसेस वी डू नॉट गिव मेडिसिन, ड्यूरिंग मेंसेस yes वी yes गिव ओनली नक्सवामिका, राइट? yes नक्सवामिका 3 or 6 in water we give. That is what Dr. Hahnemann also said in Organon, है ना? तो ड्यूरिंग मेंसेस तो वी डू नॉट गिव। सो बेस्ट इज, अगर मेंसेस 3 या 4 दिन के, 3 दिन के है तो 4th डे में दो, 5 दिन से ज्यादा है तो 10th डे को दे, and see the result. Either this cycle or the next cycle she will come with the UPT 6 6 potency or Okay. or 30 potency, no problem. okay
ओके, एनी क्वेश्चंस? बहुत अच्छी रेमेडी है, मुझे शायद पीपीटी मेरे से ज्यादा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें सिम्टम्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज कवर करती है रेमेडी है, बहुत बड़ी चीज कवर करती है। लेस प्रूवन है लेकिन बहुत बड़ी चीज कवर। अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, इसके अगर रूब्रिक्स आप अच्छे से समझोगे, तो एक अच्छा सा पिक्चर आपके सामने। और फॉलिक्यूलिनम को समझना है तो कार्सिनोसिन को समझिए, इग्नेशिया को समझिए, लाइसिनम को समझिए और फाल्कोपी को समझिए। इन रेमेडीज को, अगर एपिस्मेल को समझिए, इन रेमेडीज को समझिए, और इनके जो छूटे हुए जो हिस्से हैं उसको आप जोड़कर इसको बनाइए। ओके, सिंपल वर्ड ऑफ एडवाइस। ऐसा क्वेश्चन ओके, था कि जैसे आपने 1M वगैरह के इंडिकेशन बताए, लेकिन अगर ओवेरियन सिस्ट है या फाइब्रॉइड है तो इन केसेस में फिर कौन से ओवेरियन सिस्ट अगर है, ओवेरियन सिस्ट अगर है तो 30 और 200, 30 से शुरू करो, नहीं फर्क पड़ा 30 3 दिन के लिए दे दो, ओडी फॉर 3 days, ओके, वेट फॉर 15 days, see the menses how they are. If she's not better, give 200 weekly, okay, 3 to 4 doses, that will take care of it. Rarely you will require to go to 1M in such cases. बट अगर इमोशनल बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल अब्यूज अगर बहुत ज्यादा है, हुआ है, हिस्ट्री अगर बहुत ज्यादा है उसका, तो गो फॉर 1M straight away. ओके, थैंक यू सर। And then you can come back from 1M to 230. ओके, 1M देखे, इमोशनली अच्छी हो गई, फिजिकली ठीक नहीं हो रही, 2-3 महीने देखो, रिपीट करो यूएसजी, अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो गिव अ डोज ऑफ 200 एंड देन आफ्टर अ मंथ गिव अ डोज ऑफ 30, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू तो रिसीडिंग पोटेंसी, जो डॉक्टर हैनमैन भी रिसीडिंग पोटेंसी भी यूज करते थे, तो रिसीडिंग पोटेंसी आप कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। थैंक यू सर। ओके, और कोई? ठीक है, over to you, Mansi. And my second book is coming very soon, inshallah, very, very soon. It is ready. It is going to print now. And a big book. It's going to be a second and third volume both. It has folliculinum also in that. I have explained in detail, little more. I have explained falcopy also in detail in that. I have explained many of the rare remedies that I'm teaching. I have explained them in detail. And of course, the common remedies, my favorite is the common remedies always. I am a polychrest man. Okay, I am a polychrest man. Waiting, sir, waiting eagerly. Yeah, it will come. 2 volumes are there. Price is going to be 1,000 rupees. Because the big books are big. You'll be inshallah you'll be liking it very much. Yes, and some sir. additions to last, some additions to GNM. Dr. Pranita and Dr. Mansi are working on the metaphysics of that. तो वो भी उसके अंदर और एडिशन रहेगा, क्या कहते हैं उसको, साइकोसोमेटिक रीजंस ऑफ द डिसीजेस। वो दो जो है डॉक्टर मानसी, डॉक्टर प्रणीता उस पे काम कर रही है। तो ये दोनों, फिजियोलॉजी पार्ट डॉक्टर मनीषा कपूर इज टेकिंग केयर, एंड टाइपिंग एंड ऑल डॉक्टर प्रियंका विल बी टेकिंग केयर इंशाल्लाह। सो ये मेरे 4 अनमोल रत्न। Great, sir. यस तारिक। Two books will new 2 books, and next month will be available. Inshallah, 2 months. I have 2 the plan months to and inaugurate them on some occasion. Okay. Sir, Purana book available है क्यों ना? First book is available. हाँ. सर बुकिंग स्टार्ट हो गई है क्या? बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चंस? Thank you. देखो, बेटी ने अगर पहले बुक किया तो उससे अच्छा शुभ शकुन कुछ, अच्छा शकुन कुछ नहीं। सर पुराना बुक का, सर पुराना बुक का एडिशन, सर पुराना बुक का एडिशन होगा, न्यू एडिशन होगा? हाँ, पहला बुक का भी न्यू एडिशन आएगा। अच्छा, एक साथ 3 बुक मिलेगा ना? हाँ बिल्कुल, 3 बुक मिलेगा, 1000 में 3 बुक। एक साथ न्यू एडिशन और 2 बुक। यस, एब्सोल्युटली। 2 माह टाइम लगेगा ना सर? 2 महीना ज्यादा, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स। अपना 100 जो सेशन है इंशाल्लाह, तब हमारा प्लान है। अच्छा। गुरुजी होने चाहिए उस मंथ से। थैंक यू।
Thank you so much, sir, for wonderful learning of Folliculinum. One more pearl in the series of New Age Polychrests, and you finely differentiated with the remedies, close coming remedies, Apis, carcinosin, ignatia, and all that. So I think we will be using Folliculinum more regularly. It will become common now, and it was really wonderful. You made it very simplified so that it was easily palatable. So thank you. Thank you so much. Thank you everyone for joining. Thank you, my team PHF. Thank you. Have a Thank great you. day. God bless. Thank you. I think it was